to complete the final task. Now in this, what basically we are trying to do, mainly what basic things were needed, scripting perspective and game object perspective. I hope you all do know everything. Okay, so we can debug things later on. So right now, whatever is there with me, I delete everything. Okay, in the scene also, I am deleting everything over here. So this is as good as a new project over here. Okay. Now you can create a new scene within the same project if you want everything to be there. And let us now work in this particular new project what we are having. Okay. Now, once these things are understood, let us again, recognize the fact that Unity is not a CAD development software. Whatever we have done right now, we have used very basic shapes. Nowhere there is an option to create any complex shape or to, combine different shapes or all those things. If you want shapes from any other object, you need to have shapes either in .obj file format or .fbx file format. Okay. So for example, let us use chess.obj unity. Okay. So you will find you will be getting chess ke all the models what we want. Okay, so you can see this entire chess set is there. Now nowhere you would be able to create this in Unity. I hope this thing is understood, guys. First ये बात समझ में आ गई है इतना. Okay, so CAD model related we are having few issues. If at all you want to have files from any other software, you need to either download .obj file format or .fbx. I do not recommend OBJ. OBJ is open source 3D, but again, here the problem with OBJ file format is if you have a file, if you have a 3D object in .obj file format, it will not save texture. It will not save color. Okay, so whatever, may it be car, may it be needle, may it be an aeroplane, whatever you want to try to import, you will find everything in pure white. Okay, ये किसमें होगा pure white वाला problem? ये होगा OBJ में. Okay. Second, FBX is recommended. Whatever CAD file you want, okay, say carom.fbx, okay, Unity. So if you do try to see, you will find mainly the FBX files from different CAD sources are there. Now, if anyone wants to contribute, we would be really happy. Okay. Then here these models are there. Can you see download 3D model का option है? Please ensure the file format is .fbx. If it is not FBX, you will not see all these colors. ये दिख रहे हैं ना जो colors, textures वो सब दिख रहे हैं. As soon as you import, सब कुछ क्या हो जाएगा? White color में हो जाएगा. Okay. So this is one part which you need to be aware while importing. On a basic level, if you want to have something of your own, I recommend you all do use something called as Tinkercad. Okay, so Tinkercad के ऊपर you can log in and you can create your own 3D models. Tinkercad से you can export as an FBX or वो you can bring it to Unity. I hope the flow is clear. Okay, now in order to help us learn, okay, Unity is someone who is helping us, and in order to help us, again there is a book of 2020 by Pact Publishers. Okay,
2022, not 2020. Okay. So whatever is taught by me is again from the same book, and 90% of the part we have already covered. Okay. So I did try my best to detail everything. So I did try my best to repeat things. Now in this book again the author refers to a basic scene and those things. These things what we are trying to tell, this is again the game, again the book, sorry, and the book is also there at GitHub. Okay, so GitHub ke upar they have their own link which is there by packed. Let me just download and show. So here the user uses, okay, some free things which are given by Unity for developers like us to get familiar with the software. Now the this thing package what the user uses, what is the process, guys? This is important because tomorrow also you will be needing this. So the process is very simple. In order to get anything from the asset store, you need to go to community tab from hub. You need to click on Unity, click on Unity asset store. Please ensure you do click on sign in and you are signed in with the same email ID which you have logged in into Unity hub. Okay, so here you can search for things. In order to search for things, let us search for an environment. Okay, and let us quickly, very first thing do is let us quickly do free. Okay, so once this thing is done, all these environments are there. Now the process over here is, if you want to add anything to Unity, say this fantasy forest demo environment I want, what I will do is, when I am logged in over here, okay, what is to be done is you just need to click on the blue button which is going to tell add to my assets. Can you see this button over here? Now, once you do add it to your asset, where are you going to see this? So here, go back to editor, go to window, go to package manager over here. Okay. Now you will still not see the package. Why? Because on the top, it is in project. It is not in my asset. So just click on this button. Please do not forget to switch to my assets over here. Okay. Once you do this, you will now be seeing your assets over here. Okay. Whatever assets you have added from Unity asset store, you can see the entry of that, what we can say, fantasy forest is yet not there over here. Iske niche there is a refresh button. You can try refreshing. You will still not see that. Why? Because I have not added it yet. Okay. So from this, as soon as you click on add to my asset and you accept, this is a one way task. You will never be able to remove this. Okay. ये LIC के जैसे ही एक बार खरीद लिया तो जिंदगी के साथ भी एंड बाद भी अगर आपकी कोई ईमेल आईडी यूज करेगा तो ही और शी विल बी एबल टू सी. Now have you added the asset from Unity asset store? Here Windows package manager. Now if you hit refresh, you will find that fantasy forest का entry इधर आ. Getting this thing? Select this, click on download. Two steps. First download and then import. Okay, so first you need to download and then you need to import. So download कर लिया. Now let us import. Before importing, do you see assets over here? कितने folders? How many folders? Only one. As soon as you import, it will ask what do you want to import. थोड़ा बहुत कुछ चाहिए कि सब कुछ चाहिए? Let us click on all and let us click on import everything. Okay, now I close this. Have the number of folders increased? Yes, पहले क्या था आपके पास? You had only scenes. Now open this fantasy forest.
Okay, over here you have a folder called as the scenes. Double click on the scene. You have demo scene. Double click on it, and you will find what scene was shown. You are now there inside the scene. I hope this thing is understood. You can anytime stop. You can see all the trees and everything are there. Over here, there is a terrain. Many trees and all those things are there over here in this particular scene. Okay, are you all able to import? Can I proceed or you want me to wait for 5 minutes? Okay, so meanwhile you all are doing, let me again tell the process. Unity Hub, Community, Unity Asset Store, search for something called as environment, open this fantasy forest, click on add to my assets, ensure you are logged into the same account, open Unity editor, window, package manager, and then over here, please do switch to my assets, hit refresh, you will find the entry is there, download, import, click on all, close, you will find fantasy forest folder, scenes के अंदर double click and open the demo scene. Done. You are able to see the scene, right? You are able to over here, if you want, you can try clicking on these trees. Okay, तो जो भी trees हैं, you would be able to move them. You can see एक tree मैंने बाहर निकाल दिया जंगल के. Okay, वो नीचे है इसलिए it is not visible. Okay, guys, done. I delete both the folders. From scenes, I open my sample scene. And मेरा जो sample scene है और I just create a new scene. So I have deleted everything what I was having. Done? इतना समझ में आ गया? Okay, now let us proceed. The book which I was trying to talk, the book is taking help from an asset which is of 2017. Right now, which year we are in? 2025. So around 8 years have passed. वो 2017 वाला asset भी asset store से गायब है. Okay, asset store से how to bring anything over here वो पता लग गया. Now the author had uploaded everything on GitHub. GitHub के ऊपर से how to bring anything over here, please look at that part. So I have shared the same in a zip file with you all. Zip file you all have downloaded, right? ये standard asset करके zip file है आप सबके पास में. Okay, now you cannot directly drag and drop the zip file. Okay, zip file को double click करके folder दिखता है, इसको भी please drag and drop मत करो. You are still inside zip. So here you need to extract this. How to extract? Just select. Okay, and then over here you can right click on it and you can click on extract all. Select the zip file, right click, extract all, click extract. Okay, just besides it you will now find a folder called as standard assets. Okay, in Unity I am having a new scene. दिख रहा है अभी दो फोल्डर साथ में. विजुअली कैन यू लेट मी नो कौन सा जिप फाइल है और कौन सा फोल्डर है? आई होप ये विजुअली समझ में आ रहा है. नेवर ड्रैग एंड ड्रॉप अ जिप फाइल. ओके, अगर पैकेज है तो यू कैन इंपोर्ट इट, बट जिप फाइल को प्लीज डू नॉट ड्रैग एंड ड्रॉप. नाउ हैज एवरीवन एक्सट्रैक्टेड? डू यू वांट मी टू वेट?
How many of you are left to extract, guys? Okay, done. Now, in the folder, okay, not in the zip file, just double click and open the folder. You will find a folder called as standard asset. इसको drag and drop करो Unity editor में over here and wait. Okay, थोड़ा सा wait करो. It does take time. Drag and drop करने के बाद वो इंग्लिश में भी लिख के आ रहा है hold on. What is it telling? Hold on. Okay, so you just need to wait. Wait for few minutes. वो पूरा folder आपको standard assets वाला इधर दिख जाएगा. Done. स्टैंडर्ड एसेट्स आ गए सबके पास. वो क्लियर कर दो, कंसोल में जाके उसको क्लियर कर दो. एंड इधर भी वो एरर आ रहा है नीचे. यू कैन सी जो वर्जन है वो 2017 का है. तो ये तो वो बोल रहा है ये तो रिमूव भी कर दिया है. So it is just a warning. It is not going to create any issue. Done. Done, guys. Okay, now what steps I am going to perform, those are there in the book. I'll share the book also with you. What I want to share, please quickly see over here. Stop discussing. Okay, quickly see over here. What we do have to now check. Very first thing, will you be able to add an asset from asset store into your project? That process is known. Okay, now if at all you want to now create your own game and you want something which is ready-made, Unity has given you that also. So right now I will try to create a game with 0 lines of code. Beta, please follow these steps. Okay. So I hope everyone is now having standard assets. Now, double click on standard assets folder. Go to a folder called as prototyping. In prototyping, open prefabs. ओपन कर लिया प्रीफैब. तो इसमें बड़े में बड़ा फ्लोर जो है वो ये है, घर के जस्ट बाजू वाला फ्लोर. ड्रैग एंड ड्रॉप. ओके, वेयर डिड इट गो? इट डिड गो टू द प्लेस वेर इन यू डिड लेफ्ट. इसको ओरिजिन पे कैसे लेके जाना? रीसेट. 3 डॉट्स रीसेट किसको लिया? सो हियर जस्ट ट्राई टू सी, ये घर के बाजू में जो यहाँ पर बड़ा सा फ्लोर है, नेम है इसका फ्लोर प्रोटोटाइप 64 by 1 by 64. ओके, ले लिया इतना. ओके, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया. यू डिड रीसेट द ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट. अब वो ओरिजिन पे है. क्लिक ऑन योर मेन कैमरा. मेन कैमरा को प्लीज एडजस्ट कर लो so that you are able to see. फोल्डर बताऊं वापस? स्टैंडर्ड एसेट, उसके अंदर प्रोटोटाइपिंग फोल्डर, प्रोटोटाइपिंग के अंदर प्रीफैब, प्रीफैब के अंदर ये फ्लोर वाला आइकन. ओके, इसी को कंट्रोल डी दबाया, डुप्लीकेट हो गया. इसमें से एक और हमने निकाल लिया. दोनों का लेवल सेम है, वो हमने चेक कर लिया. सबके लेवल निकलेंगे, ये मालूम है, राइट? तो नाउ प्लीज एंश्योर दोनों के जो लेवल है वो सेम है. ओके, सो हियर कंट्रोल करके यू कैन चेक बोथ ऑफ देम आर हैविंग y value to be same. Okay, guys, done this much? Okay, now here there is a floor, here there is a floor. प्लेयर इधर से उधर कैसे जाएगा? इतनी बड़ी जंप नहीं है, तो एक छोटा वाला जो फ्लोर है वो भी ले लो. ओके, लेट अस टेक ये प्लेटफॉर्म ले लेते हैं. ओके, लेट अस टेक दिस प्लेटफॉर्म. हाउ विल यू एंश्योर इट इज देयर ऑन द सेम लेवल? What should be same? Which coordinate? Y coordinate. तो सिलेक्ट किया एंड इसका Y coordinate कर दिया 0. देन इसको कंट्रोल डी. ओके, कंट्रोल डी एक ऑब्जेक्ट एंड कंट्रोल डी और एक ऑब्जेक्ट. एंड देन प्लीज
See कि you are aligning them with some space in between. बना दिया सीन. ओके, रैंप चाहिए रैंप ले लो, सीढ़ी चाहिए सीढ़ी ले लो, घर चाहिए घर ले लो. ओके, कंट्रोल डी. होम के लिए ये एक होम को इधर ले जाओ, इसको कंट्रोल डी, एक होम को इधर. ये होम को हाउ डू आई रोटेट? सो हियर वाई एक्सिस के ऊपर आई जस्ट अलोंग वाई इसको 90 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया. नाउ इधर जो घर है ना, हियर व्हाट आई वांट, ये वाला जो घर है, ओके, आई वांट कि दिस शुड स्टार्ट, इसका ये कॉर्नर इधर मुझे अलाइन करना है. हाउ डू आई डू दैट? वेरी फर्स्ट इसका y 0 कर दिया, देन y के अलोंग इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया. नाउ व्हाट टू डू? Select the game object, press W and release, keep and press V, hover your mouse till you get the corner, लेफ्ट बटन प्रेस करके रखो और उसके कॉर्नर पे लेके जाओ. आई होप ये बात आ रही है समझ में. यू कैन ट्राई इट विद दिस कॉर्नर ऑल्सो. घर के ऊपर घर भी अगर बिठाना है तो ओके, यू कैन हैव, देन V प्रेस करके यू कैन हैव इट इन द कॉर्नर. आई होप गाइस दिस थिंग इज अंडरस्टूड. घर अलाइन करने, so say if your home is there arbitrary at any place, okay, rotate it properly, select the object, press W, keep and press V, and then mouse देखोगे तो corner select कर रहा है. It is trying to align with a vertex. Snap, left click press करके रखो and then try to take it in the corner. Okay, and then release. Done. How many lines of code? 0. इतना हो गया. डन. ट्राई क्लिकिंग ऑन प्ले. सीन दिख रहा है कुछ बना हुआ? ओके, घर वगैरह सब अच्छे से बना हुआ दिख रहा है इधर. यू हैव अ सीन ओवर हियर, राइट? नाउ आई स्टॉप दिस. ओके, प्लीज बी क्विक. आई एम गिविंग यू 2-3 more minutes to arbitrarily add anything. ओके, कुछ तो भी बना के रख लो. चलो गाइस, डन. See, do not try to beautify it, just place things. Okay, we just want a normal scene. I hope you have created the same. Okay, now when you play the game, should any one of these move? Are you playing a game or are you creating earthquake? गेम कर रहे हैं, राइट? तो कुछ भी मूव होना चाहिए नहीं. तो देयर इज वन ऑप्शन. जस्ट सी व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू. ऑल द प्रीफैब्स, शिफ्ट फर्स्ट पे क्लिक करके देन आई प्रेस शिफ्ट एंड आई सिलेक्ट all the prefabs. when you do select, on the top left जहां पर आप टैग करते थे ना, उसके जस्ट बाजू में है एक टिक called as what? Static. So if you click on this, things are going to remain what? Those are going to remain static. If you add rigid body और आपको rigid body के बाद भी static चाहिए, so then there is an option of constraint in the rigid body, that also you can do. But here there is no meaning in applying rigid body. Done, guys? Done. Now, next important and interesting thing now. Unity is already having 3 characters which they have placed over here. First person, third person, and rolling ball. Okay, see what am I doing? Very first thing, please let me know how many cameras do I have? 1. कैमरा ऐड कर सकते हैं हम लोग. You can anytime right click on camera, कैमरा ऐड हो जाएगा. आई होप ये बात आ रही है समझ में.
इफ यू डू क्लिक ऑन प्ले, कौन से कैमरा से दिख रहा है, समझ में आ रहा है अभी? ओके, नाउ आई डू अ फ्यू चेंज, आई डू गो टू एसेट्स, एसेट्स के अंदर स्टैंडर्ड एसेट्स आई एड, हियर देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड एज कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के अंदर देर आर 3 फोल्डर्स, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एंड रोलर बॉल। फर्स्ट पर्सन को मैं डबल क्लिक करके ओपन किया, देर इज अगेन अ फोल्डर कॉल्ड एज अ प्रीफैब। ओके, एसेट्स, स्टैंडर्ड एसेट्स, कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर, उसके अंदर प्रीफैब इन विच देर आर 2 फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर एंड सेकेंड इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को ड्रैग एंड ड्रॉप इन द सीन। किसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया? रिजिड बॉडी को। ये रिजिड बॉडी से ऐसे 4 लाइन व्हाइट वाले निकल रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन? इट इज हैविंग अ कैमरा। ओके, नाउ एंश्योर वन थिंग, थोड़ा सा जूम इन कर लो, सिंस वो एक बॉडी है तो हो सकता है वो आधा धरती के अंदर और आधा धरती के बाहर। कैन यू सी द सेम? ये कोलाइडर जैसा दिख रहा है यहाँ पर, सो प्लीज एंश्योर इट इज आउट फ्रॉम द शेप। कैन यू लेट मी नो विच कोलाइडर इज इट? कैप्सूल कोलाइडर। ओके, यू कैन ऑल्सो मूव दिस गेम ऑब्जेक्ट। अभी ये कैमरा कहां पर देख रहा है? इट इज सीइंग ऑन द अदर साइड, ऑन वाई। इफ यू वांट यू कैन रोटेट -180, इसको 0 कर दिया। नाउ योर कंट्रोलर इज लुकिंग देयर। ओके, नाउ सी द डिफरेंस। नाउ you can keep audio on. Now if you do try to click on play, you will find that instead of seeing from the other camera, you are now able to see with the help of mouse. W दबाओगे तो ये चल के जाएगा, आवाज भी आता है। शिफ्ट दबाओगे तो ये भागेगा। ओके, फॉरवर्ड एरो एंड शिफ्ट दबाओगे तो इट विल रन, स्पेस दबाओगे तो इट विल जंप, और बाहर जाओगे तो ये गिर गया। ओके, आई होप गाइस दिस थिंग इज अंडरस्टूड। ओके, so with the 4 arrows I hope you are able to move. I hope this thing is understood. How many lines of code? 0. Yes, क्या बेटा? यहाँ पे आप सिर्फ आपका जो मतलब बाकी का एरिया है, नॉट मेन कैमरा, नॉट डायरेक्शनल लाइट एंड नॉट द रिजिड बॉडी, इसको छोड़ के यू विल सिलेक्ट एवरीथिंग एंड देन ओवर हियर ये स्टैटिक वाला टिक आपको ऑन कर देना है। डन। ओके, एक प्रॉब्लम अभी भी है, wherever you go शैडो नहीं दिख रहा। So again you can select only the scene, not the game object, not the controller. जिसको स्टैटिक बनाया उसी में मेश रेंडरर के पास जाओ, लाइटिंग का ऑप्शन है, कास्ट शैडो ऑफ है, इसको खाली ऑन कर दो बस। तो अभी यू कैन सी दिख रहा है यहाँ पर शैडो आ गया इसका, ये देखो शैडो। सिलेक्ट योर एनवायरनमेंट, मेश रेंडरर में जाओ, लाइटिंग को ऑन करो, कास्ट शैडो जो है वो ऑफ रहेगा, उसको ऑन करो। ओके, सो नाउ इफ यू डू ट्राई टू रन, आपको गेम के अंदर भी देखो शैडो दिख रही है, दिख रही है यहाँ पे शैडो। ओके गाइस, डन। डन। नाउ वी डिड यूज व्हाट? वी डिड यूज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ इज फर्स्ट पर्सन हैविंग अ डिफॉल्ट इनबिल्ट कैमरा? यस। ओके, तो आपका कैमरा, ये मेन कैमरा को भले आपने बंद कर दिया, देन टू इफ यू डू ट्राई टू क्लिक ऑन प्ले, you will find that you are still able to see. Okay guys, done. Okay, now next go back to standard assets. Okay,
go to go back to standard assets, go to environment folder, open water basic, नहीं, ओपन वाटर 4 प्रीफैब, इसके अंदर वाटर बेसिक, हाँ ये ले लो। ओके, go to assets, go to standard assets, go to environment, go to water basic के अंदर go to prefab, और पहले वाला जो वाटर है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ओके, बहुत छोटू सा एक वाटर दिख रहा है इधर। ओके, नाउ इसका जो y कोऑर्डिनेट है, मेक द y कोऑर्डिनेट 0, यूनिफॉर्म स्केल ऑन रख के इसको स्केल कर दो अच्छा खासा। ओके, आप लोगों को चुल्लू भर पानी दिया है, उससे समुंदर बना दो अभी इधर। ओके, इसको स्केल कर दो। कैन यू सी दिस थिंग नाउ? ओके, स्केल ऑन करके आई हैव स्केल्ड। इफ यू डू नाउ ट्राई टू क्लिक ऑन प्ले, यू विल फाइंड वाटर। ओके, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है भी दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम, जो वाटर है इसका -0.01 कर दो, जस्ट एंश्योर कि इट गोज अ बिट डाउन। ओके, नाउ कैन यू सी वाटर नाउ ओवर हियर? नाउ व्हाट आई वांटेड टू शो, वाटर के ऊपर जैसे ही जाओगे क्या होगा? आर पार। ओके, यू आर फॉलिंग डाउन, यू डू सी वाटर ओवर हियर, राइट? इज इट मूविंग? जैसे वाटर के जैसा वेव कर रहा है, इज इट वेविंग? नाउ एज सुन एज यू गो ऑन वाटर क्या होगा? यू आर falling down. What can we add to water? Fish नहीं, फिश पे ऐड कर रहा है, फिर इधर खुद बैठ के फिशिंग करने बैठ जाएगा तू। ऐसा क्या है with the help of which will not be able to pass through? रिजिड बॉडी नहीं, कोलाइडर। तो वाटर को सिलेक्ट किया, ऐड कंपोनेंट, टाइप कोलाइडर, इसमें से मेश कोलाइडर दे दो वाटर को। नाउ इफ यू डू ट्राई टू गो, you will be able to walk on water. Okay, are you able to walk on water? Mesh collider. Guys, done. Can I proceed? You are able to add water, right? Chalo. Now next. Along with this, if you go to standard asset, if you open particle system, if you go to prefab, okay, here many prefabs are there. For example, when you do drive a car, टायर में से क्या निकलते हुए दिखता है? Dust and all those things. Silencer में से smoke. Here there is what we can say prefab called as firework. ये firework को मैं I do place a firework over here. Okay. What happens now? Try to see. Firework मैंने ऐड करके उधर डाला है. Can you see what is happening? Can you see fireworks over here? Okay. Now, अभी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? ऑडियो में आप लोगों को बताया था ना, जैसे ही प्ले करते हो ऑडियो स्टार्ट हो जाता है, एक बार बजता है, उसको क्या व्हाट यू नीड टू स्विच? वो क्या चेक है विच यू नीड टू डिसेबल? ऑडियो में साउंड जैसे ही ऐड करते हो, प्ले बटन दबाए नहीं, जितने साउंड है सब एक एक बार चलेंगे। क्या अनचेक करना पड़ा था? प्ले ऑन वेक। ओके, तो हियर आल्सो यू नीड टू रिमूव द सेम। आई होप ये फायरवर्क्स वाला भी समझ आ रहा है। नाउ बाय डिफॉल्ट फायरवर्क्स जो है इसका प्ले ऑन अवेक जो है वो स्टार्ट है। कैन यू सी प्ले ऑन अवेक?
ओके, इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस, क्या करना पड़ेगा आपको? प्ले फंक्शन यू विल हैव टू टाइप इन अ स्क्रिप्ट. I hope you are understanding this thing. Okay, now till here are things understood. Both of you please sit down for 2 minutes. जो important part है वो देख लो, फिर अच्छे से नहा धो के आ जाना. परसों से नहाए नहीं हो, समझ में आ रहा है वो. चलो, let us proceed. Okay, now, so the important part what I wanted to show now is related to the characters. कितने characters हैं हमारे पास? 3. Okay, what have we added, guys? What did we add over here? ये कौन है इधर बैठा हुआ? Who is this person? First person. First person समझ में आया? How is it working? Do you need to add a script to work? No, everything is already there, right? Now, I delete first person character. First person कैसे add किया था? That also you do know. I open third person. I double click prefab, and over here let us add this second वाला third person over here. दिख रहा है एक आदमी आ गया इधर. Can you see a person standing over here? Okay, now if I now click on play, what happens? Please try to see. बेटा क्या प्रॉब्लम हो गया इधर? What is the problem right now? मैंने फर्स्ट पर्सन को डिलीट किया, थर्ड पर्सन ऐड किया, ये बोल रहा है कोई कैमरा ही नहीं है. तो फर्स्ट पर्सन के साथ इनबिल्ट क्या होता है? कैमरा आता है. थर्ड पर्सन के साथ देयर इज नो इनबिल्ट कैमरा. कैमरा अगर आप विच योर कैमरा वॉज देयर अगर एनेबल करोगे तो देयर इज अ प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम है देखो अब यहाँ पर. वो आदमी किधर दिख रहा है कि कहाँ भाग रहा है वो? आपका कैमरा कहाँ पर है? गेटिंग इट और नॉट गेटिंग इट? So here when you are using third person, disable the main camera, scroll towards your main this thing third person के ऊपर right click करो and you can, I am just expanding, third person पे right click करके please add a camera. तो कैमरा एज अ चाइल्ड जाता है. कैमरा by default is spawned on the feet of this particular third person. Please ensure that you move the camera properly so that you are able to see the proper, you are able to have a proper view. Okay, GTA बन गया अभी. कौन कौन आ रहे हो अभी मारामारी करने इधर? जल्दी बताओ. Okay, can you see this thing? Okay, shift दबाओगे तो ये थोड़ा स्लो हो रहा है and then it is able to run. Okay, you can any time move. पानी के ऊपर भी चल रहा है ये. Third person, guys, understood? Third person. Third person में what are you not going to get by default? Camera. Add a camera on third person and then move the camera. I hope this thing is understood. Out of 3 characters, first person and third person, are both of them clear? Okay. Now I delete third person. I go back to characters. There is a character called as roller ball. Prefab एक ही है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया. आई डू ट्राई टू क्लिक ऑन प्ले. प्ले होता है कि एरर आता है? प्लीज सी. व्हाट डू आई डू नाउ? सॉल्यूशन बताओ जल्दी. कैमरा, या तो कैमरा ऐड करो या कैमरा ऑन करो. कैमरा ऑलरेडी है, उसको क्या कर दिया हमने? ऑन. अब अगर देखोगे व्हाट विल यू सी? बॉल बहुत दूर है. ओके, एंड देन यू कैन सी रोलर बॉल रोल कर रहा है ये. गेटिंग इट और नॉट गेटिंग इट? Okay, the problem with this is if you remove main camera and if you add a camera into the ball, if you make the camera to be a child, you will be there in a problem. What is the problem? Please see. If the parent rotates, what is going to happen? Child is also going to rotate. So if you do try to click on play now, आगे का बटन जैसे ही दबाओगे क्या हो रहा है? ये तो गेम घूम रहा है.
Okay, then if you do press space, okay, you can see it is completely rotating. So here you need to add one more script जिसके अंदर you need to उसको you have to tell कि उसको rotate मत कर. But अगर ऐसा केस है तो हम लोग usually कैमरा टॉप पे लगा के we do move that particular game object. I hope ये तीनों चीजें पता लग गई है. I hope इतना समझ में आ गया. Okay, so last part right now. I go back to assets. I open a new blank scene. I do not save anything. Please help me or guide me. How do I add first person in that random forest? या third person मेरे को random forest में add करना. मेरी बात आई है नहीं आई समझ में? क्या करना पड़ेगा? Windows, Package Manager, My Assets, Fantasy Forest, import, download करो. You will have one more folder. Standard asset already है, right? Fantasy Forest का scene open कर लिया. Okay, इसके अंदर what are you going to do? इसके अंदर एक problem है, that is why I am showing. So here what are you going to do now? Here go back to assets, standard asset, characters, first person, prefab, rigid body वाले को drag and drop कर दिया. Please ensure ये प्लेटफॉर्म से ऊपर रहे. And then now if you do try to click on play, problem start होता है यहाँ पे. ये कुछ हो ही नहीं रहा है, मूव नहीं हो रहा है. अभी जस्ट पहले आप लोगों ने क्या बताया था? फर्स्ट पर्सन ऐसा है जो मूव करता है. व्हाई इज फर्स्ट पर्सन नॉट मूविंग? यू आर सीइंग फ्रॉम अ डिफॉल्ट कैमरा. ओके, तो ये जो डिफॉल्ट कैमरा इसके साथ आया था उसको प्लीज डिसेबल कर दो. हमारा फर्स्ट पर्सन ऐसा है जिसको इनबिल्ट क्या है, हमारे पास कैमरा है. सो नाउ कैन यू मूव? ओके, हाउ मेनी लाइंस ऑफ स्क्रिप्ट्स गाइस? पूरा सीन वगैरह सब कुछ रेडी है. गेटिंग इट और नॉट गेटिंग इट? ओके, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो एड होम, यू कैन एड द थर्ड पर्सन ऑल्सो. ओके, you can also check for something called as laboratories over here. Okay, please do not forget to switch to free over here. Then agar kuch college ka scene or something you want, you can use this labs also over here. Environment ये ले लो और मूवमेंट करने के लिए फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन रोलर कहां से उठा लो? स्टैंडर्ड एसेट से ले लो. तो योर गेम विल बी रेडी इन नो टाइम. Okay, done. Okay, so you can have a 10 minutes break. Please be back by 4:25. For computer vision, what we have to install, those instructions I'll give you in 15 minutes post break. And then tomorrow we can start with computer vision and वो headset wala. Okay, that is it. Then we will stop over there. थोड़ा जल्दी आ जाओ.